यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करता है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लगे आवाज आ रही। हाँ, मेरे में मनीषा लिख दिया। कॉर्नर में मत ले गुड मॉर्निंग मोटे सर। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ नहीं देख रहे। गुड। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर सर्विस बार बार हो रहा है। सर हेलो सर। हेलो सर। सर जी सर बोलिए।
किसको बोल रहे हैं? हमको बोल रहे हैं? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले संस्था प्रमुख प्राचार्य जी से स्वीकृति लेना चाहूंगा। हेलो सर। बिल्कुल प्रारंभ करें सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज रसायन शास्त्र विभाग गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ में एक्सपर्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात रसायन शास्त्र के अनुप्रयोग। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसका रसायन शास्त्र में ही नहीं बल्कि मेडिकल साइंस, बायो साइंस एवं फॉरेंसिक साइंस में बहुतायत से उपयोग होता है। यह टॉपिक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से कैसे चिकित्सा में उपयोग हो रहा है, कैसे हम पदार्थों की शुद्धता को चेक कर सकते हैं, तो यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं टॉपिक की नॉलेज के बाद पुनः संस्था प्रमुख प्राचार्य जी से चाहूंगा कि वो हमें शुभ संदेश प्रेषित करें। प्राचार्य महोदय। थैंक यू सर। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ और आनंद निकेतन महाविद्यालय आनंद वन वरोरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता डॉक्टर संजय पुरुषोत्तराव मोटे जी, असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस कॉलेज डिग्रास यवतमाल। आपका सर मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान के अवसर पर पूरा महाविद्यालय परिवार आह्लादित है। दोनों महाविद्यालयों के रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष बिछुआ से डॉक्टर गौतम पाटिल और वरोरा से डॉक्टर एस.ए. शाह, आपके संयुक्त प्रयास से यह व्याख्यान आज हो रहा है। इस मौके पर हम अपने दोनों कन्वीनर, दोनों संस्थाओं के रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्षों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रिंसिपल आनंद निकेतन कॉलेज वरोरा डॉक्टर मृणाल काले जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी अभिनंदन। इस महाविद्यालय, हमारे महाविद्यालय की IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम और हमारे महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के हमारे सभी साथी डॉक्टर नसीर खान, डॉक्टर अनिल अहिरवाल, श्री भोजराज झरबड़े, श्री प्रदीप मालविया और हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के अन्य सदस्य डॉक्टर कविता चहल, डॉक्टर सुनील बेलिया, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये बात मानता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय पर होने वाला आज का यह व्याख्यान दोनों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए तो लाभप्रद होगा ही, हम शिक्षकों के लिए भी ज्ञान का नया संचार, नया संदेश देगा। हम सबको बहुत ऐसी चीजें आज पता चलेंगी जो इस विषय में हमको या तो सतही ज्ञान है या नाम मात्र का ज्ञान है। तो आज इस मौके पर हमारा महाविद्यालय, पूरा महाविद्यालय परिवार, आप सभी दोनों महाविद्यालयों से जो हमारे विभाग के शिक्षकगण हैं और आनंद निकेतन महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर मृणाल काले जी, उस महाविद्यालय के सभी शिक्षकगण जो रसायन शास्त्र विभाग के हैं, अन्य विभाग के हैं और सभी विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान माला में व्याख्यान के अवसर पर जितने भी हमारे प्रतिभागी जुड़ रहे हैं, सबको हमारी शुभकामनाएं। निसंदेह आज डॉक्टर संजय पुरुषोत्तराव माटे जी का यह व्याख्यान विद्यार्थियों के लिए और रसायन विज्ञान के जितने भी जिज्ञासु हैं उन सब के लिए यह आज का व्याख्यान बहुत उपयोगी होगा। पुनः मैं अपने इमिनेंट स्पीकर संजय जी का स्वागत करते हुए अपने
साथ ही जो हमारे प्राचार्य हैं आनंद निकेतन महाविद्यालय का, उनका भी स्वागत करते हुए, डॉक्टर एस.ए. शाह जी का स्वागत करते हुए और हमारी आयोजक टीम को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सब लोग आज इस व्याख्यान में बहुत धैर्य के साथ सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यह व्याख्यान बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओवर टू यू अहिरवार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीष वचन से हम और भी उत्साहित हुए कि और भी बढ़ चढ़ के अपने महाविद्यालय और डिपार्टमेंट में ऐसे कार्य होते रहें। थैंक यू सर। इसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए अपने महाविद्यालय की IQAC प्रभारी एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूजा तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो भी हमें शुभ संदेश प्रेषित करें। डॉक्टर पूजा तिवारी जी। मैडम तिवारी जी। शायद मैडम तैयारी में लगी होंगी सर, तो यस सर, कनेक्ट नहीं है तो आगे बढ़े, है ना? ठीक। मैडम का भी वेबिनार होने की वजह से उनकी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैडम का धन्यवाद स्वीकार करते हुए मैं प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूं और साथ ही साथ सर को बताना चाहता हूं कि ये जो MOU है 2 कॉलेजों के बीच में है, एक गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ और एक आनंद निकेतन कॉलेज बड़ौरा महाराष्ट्र। तो इस MOU में पहले तो हम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं अपने प्राचार्य डॉक्टर RP यादव जी को और प्राचार्य आनंद निकेतन कॉलेज के डॉक्टर MK काले जी को कि ऐसी MOU से न सिर्फ हमारे विभाग का बल्कि कॉलेज और हमारे आदिवासी अंचल में इस महाविद्यालय का नाम रोशन हो। थैंक यू सर, दोनों सरों का। आगे की प्रोसेस को मैं बढ़ाते हुए ये पहले ही बता चुका हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं अपने कन्वेनर डॉक्टर गौतम पाटिल जी का भी अथक प्रयास से ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं आगे की प्रक्रिया के लिए अब ये माइक देना चाहूंगा डॉक्टर नसरीन अंजुम खान को कि वो आज के एक्सपर्ट लेक्चर का हमारा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कराएं और हम सबको उनसे परिचित कराएं। डॉक्टर नसरीन जी। धन्यवाद अहिरवार सर। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में मैं समस्त सम्माननीय गणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और आज आप सभी के समक्ष हमारे आज के एमिनेंट स्पीकर जी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए आपके समक्ष सादर प्रस्तुत हूँ। आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर डॉक्टर संजय पुरुषोत्तमराव मोटे जी, जो कि B.Arts एंड NB कॉमर्स एंड BP साइंस कॉलेज डिग्रस डिस्ट्रिक्ट यवतमाल महाराष्ट्र से हैं और वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर की PhD 2012 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हुई है। सर के रिसर्च का टॉपिक है सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चरल स्टडीज ऑफ हेप्टा एसिटिल माल्टोसिस आइसोसाइनाइड एंड रिलेटेड कंपाउंड, जो कि SGBA यूनिवर्सिटी अमरावती से है। सर ने अभी तक के 4 रिफ्रेशर कोर्सेज किए हैं। सर के 9 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं। सर के नाम पर 3 पेटेंट पब्लिश्ड हैं। 19 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सर ने पार्टिसिपेट किया है। सर ने द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन कोलकाता एंड अमरावती यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री टीचर एसोसिएशन अमरावती की मेंबरशिप भी ली है। अब मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारे इनविजिट स्पीकर डॉक्टर संजय पुरुषोत्तमराव मोटे को इनवाइट करना चाहूंगी कि वे अपना व्याख्यान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सर प्लीज। Thank you, Nasreen Khan ma'am and Dr. our principal राजेंद्र प्रसाद यादव जी, आपने बड़ा हमारा स्वागत किया और इंट्रोडक्शन दिया। And also I thank very much thankful to Dr. Gautam Patil sir
to introduce me for this lecture. So I'm going to share my slides. Now we move towards the our topic of today's session. Am I audible? जी सर. Yes, sir. Screen Yes, दिख sir. रही है मेरे? Screen is visualized? Yes, sir. जी Yes, sir. सर. This way. Yes sir. Yes, sir. So first of all, good afternoon to all. And as of you know, today we discuss the vast topic of applications of spectroscopy. As you know, in this topic we cover the introduction, types, and their application. So basically, we move towards the introduction. As of all you know, in organic chemists are working on this spectroscopy basically to identify the structural elucidation of a compound known and unknown. But organic chemists frequently obtain many new compounds through a laboratory synthesis and extraction from biological and environmental sources. For that, they need identify to confirm the structure of these new compounds. Uh, in before 50s, they had only three general methods to available to obtain this information. First is an elemental analysis of the compound. As usually in laboratory, we have performed all these elemental analysis. For example, nitrogen and sulfur like that. Okay, but for crucial carbon and hydrogen like that they are not easy to perform in easy process in laboratory. Okay, but second pass is chemical transformation. Chemical transformation is a we have to know through the different types of reaction and different types of chemical tests that we have to perform in organic chemistry as well as in organic chemistry to identify these chemical transformation or group indication that are using the compound they wanted to identify, then observe the results. Many of these transformation were simple chemical tests that provide the information rapidly within a minute. We got this all information. And third is a physical measurement. The measurement of compounds such as refractive index, melting and boiling point, and like the density we have to calculate. But now, in chemists have instrument to help the identify the structure of the compound. This instrument supplement the supplementary data to provide the compound to analyze the compound, known or unknown compound. For example, there's widely used the techniques NMR, IR, mass, LCMS, GCMS, LC, yeah, HPLC, and all these things are. But basically, NMR and IR and mass spectroscopy, masobar, like that techniques were used to identify these unknown or known compound elucidation. But then, first of all, we know what is meant by spectroscopy. What spectra is obtained through this. So spectroscopy is the study of interaction between light and matter, where the absorption and emission of light or other radiation by matter are studied and measured in the form of a spectra and different form in the form of a visual. Suppose we UV in colorimeter, spectrophotometer, we have to perform in laboratory experiment. So spectroscopy is mainly deals with the dispersion of light, other radiation that is caused by an object, which allows the study of various properties of the object. Okay, so after dealing with with this matter, we got some type of a signal. That signal get recorded in the form of a spectra. Okay, that amplified. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible now. Okay. Okay.
स्क्रीन इज क्लियर? सर मैं थोड़ा सा, हाँ सर बोलिए। एक्चुअली क्या है, हमारे यूजी और पीजी के स्टूडेंट है, तो सर थोड़ा दोनों बाईलिंगुअल, आप थोड़ा सा। ओके ओके, कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जब स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन स्टडी करते हैं, सो इन दैट केस, हेलो, am I audible? यस सर। Okay. Yeah, audible. Spectroscopy is basically with the absorption and emission. Absorption mean कोई substance अगर कोई rays absorb करता है यानी समाविष्ट करता है और उसके बाद जो rest of the light is got emitted. So that is study with the help of this instrument. It is called as spectroscopy. The spectroscopy mainly dispersion, उसके बाद जो आता है जो light का एक dispersion, light radiation caused by that allows various properties of the that define. We got the different properties of a object with that respect to spectroscopy. Then what is spectrometer? Spectrometer किसे कहते हैं? The spectrometer is a scientific instrument that is used देखा होगा माइक्रो यूवी माइक्रोवेव sorry IR, then microwave and then radio frequencies. These are the frequency, ये frequency ranges है। इनमें से जो पार्टिकल सब्सटेंस है उसके साथ जो कोई उनका इंटरेक्शन होने के बाद जो आपको मिलता है, इन केस ऑफ कोलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी गॉट सम जो रेज वो कोई एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ लाइट गेट्स एमिटेड. सो दैट इज द बेसिकली. एंड द आपको डायग्राम में यहाँ पे शो दिख रहा होगा दैट द स्टिमुलस the light that the sources are different, light, heat and current voltage sources are used. Okay, hello, am I audible? Hello sir. Yes sir. Okay sir. Okay, audible. सर थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि वो सुन रहा है कि नहीं, तो कोई ना कोई बोलते चाहिए. सो ओके, सो the properties observed spectrometer varies with the type of spectrometer being used. आप जो spectrometer यूज कर रहे हैं according to कौन सा substance आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने spectrometer यूज करना है. लाइट सोर्स भी उसके हिसाब से हम यूज करते हैं. लाइट है, साधारण लाइट है, हीट है, करंट है, वोल्टेज है. ओके, सैंपल जो डायग्राम दिख रहा है उसमें सैंपल होल्डर है, इनपुट, उसके बाद ग्रेटिंग ऑफ सिग्नल, उसके एम्पलीफायर. द सिग्नल्स आर वेरी स्मॉल, सो फॉर दैट द पर्पस वी यूज एम्पलीफायर टू मेक द लार्जर, कन्वर्ट इनटू डिजिटलाइजेशन. देन आफ्टर दैट वी गॉट सम रीडिंग्स. ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर पोटेंशियोमीटर, कंडक्टोमीटर और पोलरिमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कॉलेज में अपने लैब में यूज किया है, तो वहां पे आपको रीडिंग जो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ओहन, दैट रीडिंग्स पॉइंट समथिंग लाइक दैट इन डिजिटल फॉर्मेट. But how it will convert, the process is that is called as amplified and digitalization. And suppose it on this in NMR IR we got a plot in different format of a pattern that we have to later discuss in here. So this is all about the spectrometer is the instrument. The spectrophotometer क्या है? The spectrophotometer is a particularly type of a spectrometer that measure the interaction. कौन से इंटरैक्शन इन दैट सब्सटेंस और लाइट के बीच में कौन से इंटरैक्शन हो रहे हैं वो मेजर करते हैं. एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सैंपल ऑफ द इमिशन, जो उसके बाद इमिट होते हैं वो लाइक दैट. देन फ्लोरोसेंट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फ्लोरोसेंट, फॉस्फोरेसेंस एंड इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय वेरियस सैंपल्स वी हैव टू स्टडी. In terms of electromagnetic radiation, spectrophotometer as deals with the measurement of different properties of light and its interaction with matter. That they compared with the measurement with known values of previous studied as the compound. The measure up study, this is part of a spectrophotometer. Okay. In case of this commonly used in laboratories, for example, to measure the concentration of various samples on the basis of total light get absorbed and sampled.
जो अपन लेबोरेटरी, फॉर एग्जांपल आपने लेबोरेटरी में यूज किया होगा, कोलोरीमीटर एंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर यूज इन द लेबोरेटरी, सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं, उसको अपन बताते हैं कि उसमें क्या एब्जॉर्बेंस आया है, क्या ट्रांसमिटेंस आया है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रो that then what is meant by spectroscope क्या होता है? Basically the spectroscope is used to optical, it is also called as optical spectrometer, is a device that measure different properties of light, cover specific range of spectrum used for the analysis of various objects. जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखे हैं उनको एनालिसिस के लिए can use that according to the substance properties that you have to use. The property is measured mostly the intensity of light, although the polarization of light is also measured under some conditions. Conditions भी होती है, temperature also matters, liquid, solid है, that also depends, वो भी मैटर करता है कि लाइट की, और इंटेंसिटी ऑल्सो मैटर, बट आफ्टर इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसको फिल्टर हम लगाते हैं, वो फिल्टर के बाद जो इक्वल वेवलेंथ वाले रेज हमें चाहिए वो उसमें फॉल होते हैं, एंड देन दे गेट एमिटेड एंड सम गेट एब्सॉर्ब. ओके, the spectroscope are commonly used to study the astronomy purpose, okay, but for detecting the various samples of the sky. But in chemistry, to analyze the various samples, पुराने जमाने में we have used prisms in a spectroscope, but now the gratings are diffraction gratings are used in a IR, NMR, other different mobile slits and photodetectors are used. The mostly used deduced chemical composition objects based on radiation produced by different objects, depends upon that. Then spectrograph क्या है? The last stage is a spectrograph, जो आपने on that basis we determine, और हम बताते हैं कि वो सब्सटेंस में क्या क्या है. ओके, क्या है यानी फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन है, हाइड्रोजन, कार्बन, और जो भी अपने जो डिटरमाइन करते हैं पर्टिकुलरली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट, एलिमेंटल एनालिसिस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, we got that in the form of a spectra that is called as a spectrograph. The spectrograph is a scientific instrument that detects different light and separates them by their wavelength and frequencies, which are recorded by multi-detector. Number of detectors, these are mostly used for obtaining and recording the astronomical spectrum. The rays then reach the different diffraction grating that disperse the light into different wavelengths. Light आता है, in light there are different wavelengths, lights are there. They isolate or filter the light and pass through the same wavelength light for the analysis of a substance. The different which are past the detector analysis are individual wavelengths. These are highly useful to analyze the incoming light from various astronomical objects for the analysis of the chemical composition of those objects. Then the spectra is a singular spectrum of optics or color observed when light dispersed through the prism. Prism के बाद filter होने के बाद जो हमें आता है, after interaction with the substance, we got that signal in the form of lines. Okay, lines or color, in the form of color or lines we got. The spectrum refers the range of various associated light with the other waves. In light, electromagnetic spectrum is the most commonly used. The electromagnetic spectrum includes the range of frequencies, electromagnetic radiations that are used to characterize the distribution of electromagnetic radiation absorbed or emitted by an object. The mass spectrum is also used to in spectroscopy based on the ion abundance as a function of mass and charge ratio. For example, in mass spectroscopy, after fragmentation, we got some, with respect to fragmentation, we got some ion peaks, okay, in a mass, that in the form of a line that is called as a spectra. Electron spectrum, in another spectrum used in physics, that is number of intensity of particles depending upon the particle energy. Then the types of different spectroscopy, usually we studied, आप अपन इन सिलेबस में पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट उसके प्रकार है, द प्रकार क्लासिफाइड हुए हैं, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, दो प्रकार से उसको उनका सेपरेशन, इनका क्लासिफिकेशन किया है
and absorption and emission spectroscopy. That in general, 22 types of spectroscopy. Most of the spectroscopy they are merged with correlated with each other. All spectroscopy. So first is absorption spectroscopy, astronomical spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, circular dichroism spectroscopy, electrochemical independence spectroscopy (EIS), electron spin resonance spectroscopy (ESR), पीजी में आप पढ़ते हैं, emission spectroscopy, energy dispersive spectroscopy, fluorescence spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, that FTIR जो हमें पढ़ना है, FTIR is the advanced version of IR spectroscopy, gamma ray spectroscopy, infrared IR spectroscopy, or also called as a vibrational spectroscopy, magnetic resonance spectroscopy. This spectroscopy is widely used in a medical field. Mass spectroscopy, molecular spectroscopy, masobar spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, photoelectron spectroscopy, Raman spectroscopy, UV spectroscopy, ultraviolet and visible combined spectroscopy, X-ray, photoelectron and spectroscopy. XRD and XRF are the two types. Of the another type is a same type. Then this is the electromagnetic spectrum. While we start from gamma rays, X-rays, UV, while increasing the wavelength, but while long radio waves, for example, radio waves, microwave, IR, UV, and gamma, that time the frequency goes on increasing. Okay, so that is the towards from long radio waves to gamma rays. In visible rays, we obtained a color. Okay, that we make in visible region. आप जो in naked eyes we see उगड़ा डोळानी जो खुले आंख से आप जो कलर देख रहे हैं अभी, that is a part of a visible spectrum. In different जो सब्सटेंस पे जो रेज गिर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन का कलर हमें दिख रहा है. That is the main this is the advantage of रिफ्लेक्शन और एब्सॉर्प्शन के बाद जो एमिट हो रहा है वो दिख रहा है. That is the main that is called as a visible spectrum. वो अपन यूनिट नैनोमीटर में अब यूज करते हैं वो मेजर करने के लिए. So next, basically the types of absorption spectroscopy we have to study discussed here by using electromagnetic radiation, and then X-ray is X-ray absorption spectroscopy, ultraviolet visible, it's a UV visible absorption spectroscopy, IR absorption spectroscopy, infrared called as microwave in microwave absorption spectroscopy, radio waves, ESR electron spin resonance spectroscopy, and nuclear magnetic resonance spectroscopy. That this nuclear magnetic resonance spectroscopy is widely studied in a BSc final year or PG student, and researchers are also used. That is important for that study. So then out of that we study the first ultraviolet visible spectroscopy. Generally, this is the screen. The instrument is visualized that ultraviolets and visible region of electromagnetic spectrum corresponds to electron energy level transition in atoms and molecules. In spectroscopy, UV visual spectroscopy can be used to prove the electronic structure of molecules in a sample, subsequently enabling the identification of the compounds present. For example, in UV visible spectroscopy, conjugation के लिए हम use करते हैं to determine the conjugation, electronic transition. While the transition is obtained from N to N star, okay, pi to pi star, sigma to sigma star, pi to pi star, like that. There are different transitions that जो आपने पहले ही पढ़ा है. So UV spectroscopy use electronic transition to determine the bonding pattern. जो दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट है उसमें सैंपल कैसे प्लेस किया जाता है वो, and then we got a reading in the form of a wavelength. स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशन क्या है? So spectrophotometry is widely used to detect the color sample, determination of a color sample, the ion detection like that.
ओके जो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं एंड पोलरीमीटर भी यूज करते हैं. ओके सो एंड यूवी स्पेक्ट्रो आपने यूज किया है ये लैब. द सुटेबल फॉर पोलरीमेट्रिक मेजरमेंट, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मेजरमेंट, traces in organic analysis and monitoring this by using this UV spectrophotometer. The UV visual spectroscopy is particularly used for identifying peptide bonds. Peptide amino acids combines with each other, they forms a peptide. So, for example, DNA number of amino acids are there. That to analyze with this UV spectroscopy, certain amino acids we have to identify by the side chains are there. And certain prosthetic groups and coenzymes to analyze by using this UV spectroscopy. This in extensive library of colorimetric and organic analysis method is available, including wide range of applications, clinical analysis, color analysis, trace pollutants present in water and in atmosphere to identify chromium 6, the measure with the basis of this UV visible spectroscopy. This is the graph. When we plot against the absorption against wavelength, that is lambda, we got different graphs. While increasing the transition, double bond जैसे increase हो रहा है, तो lambda max इनकी wavelength भी बढ़ रही है. By using their absorption also goes on increasing. In case of with respect to benzene, naphthalene, anthracene, and tetracene, we have shown the lambda maxes goes on increasing in nanometer, or absorbance is also increased by using different. This type of pattern is obtained by using different. Suppose we have used different types of a product, different types of compounds. We got this type of spectral pattern. Okay. Then the next is the infrared spectroscopy. That also the spectroscopy deals with the photon in an infrared region, IR region of electromagnetic spectrum have characteristic energies corresponding to those types of molecular vibrations. This means the IR spectroscopy currently remains the primary tool to identify vibrational and rotational mode of a molecule. Molecule में जो भी वाइब्रेशन होते हैं, रोटेशन घूमता है वो, दैट विल identify in IR region in an electromagnetic spectrum. Okay, so IR spectrometers typically measures the relative absorption of a different frequencies in a particularly IR region of by sample. The absorption spectrum can be then used to identify the types of molecular bond present in the sample, indicating the type of molecular structure present in the sample. For example, generally, basically, in IR spectroscopy, in organic chemistry, to identify the आप हमें मिलता functional group, जैसे aldehyde है, alcohol है, CH है, CH stretching and bending frequencies, number of vibrational modes are there, stretching, bending, wagging, twisting, like that. But particularly stretching and bending frequency जो भी मोड होते हैं उनके हिसाब से अपन वी गॉट अ स्पेक्ट्रा, हमको स्पेक्ट्रल पैटर्न मिलता है इन अ डिफरेंट regions, that centimeter in the form of centimeter inverse. So this is the type of spectra. These are the two instruments in the right hand side. This one is generally FTIR, and this is the microscopic IR, microscopic optical infrared spectroscopy is called as. In that microscopic, we visualize actual structure of a transformation. We have to visualize this structure. Okay, in a FTIR, there is while making the sample in KBR and Nujol have to used, and generally KBR and Nujol is a liquid. KBR pellets are used, but right now the ATR as ATR techniques are used to this to the advantage of this disadvantage of this KBR and Nujol. So ATR accessory, that is called attenuated total reflectance, is used by using a diamond
सैंपल रखते हैं, उसके बाद उसका स्पेक्ट्रोमीटर. द IR is again classified in two types: dispersive spectroscopy and FTIR, which is a single spectroscopy. Dispersive is an older one that used in old days. But right now, FTIR is used to determine for this type of a spectrum, stretching frequencies, okay, called. Then the IR spectroscopy particularly measures the bond vibration frequencies in a molecule and is used to determine the functional groups. For example, in NH stretching frequency is near about 3300 and 3500 centimeter inverse. जाने 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें एनएच स्ट्रेचिंग पर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर एग्जांपल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन इज ऑब्टेन 2100 से 2260 सेंटीमीटर इनवर्स. इन कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड इज ऑब्टेन 1650 से 88 centimeter inverse. In 500 to 1000 centimeter is called as a fingerprint region, and CH tracing frequency is obtained at 2850 to 3100 centimeter inverse. This type of graph is obtained. Now move towards the application of FTIR and FTIR microscopy. Okay, there are a number of applications in a FTIR to determine qualitative and quantitative FTIR analysis. For quality control and pharmacopoeia testings are used. The identification of polymers and polymers blend with this is IR can analyze polymers and rubber industry due to aging and environmental like oxidation and hydrolysis. There is a changes is obtained. उसके कितना पुराना और नया रबर है, पॉलीमर है, आफ्टर द environmental effect you can analyze by using this technology. The identification of traces organic contaminants in surfaces, then the analysis of organic coating and oxide thickness on metals such as aluminium, की thickness कितनी है after oxidation, can analysis of adhesive coating and adhesion promoters or coupling agent. Okay, the microscopic particles chemical analysis done by FTIR microscopy. The stain and surface blemishes remnant for a cleaning and degreasing process. Cleaning and degreasing process in industry जो होता है उसमें through this optical microscopy and FTIR microscopy technique and used and determine their use are there. In resin analysis and composite material release films, so to analyze by using FTIR, the different leachable contaminants, plasticizers, mold release agents, and weak boundary layers coupled by XPS surface chemical analysis techniques to use this to analyze these plasticizers like that. The FTIR identification rubber and filled rubber coupled with the pyrolysis by using GCMS. Okay, FTIR के साथ हम GCMS भी use कर सकते हैं while combine with each other. तो रबर का identification कर सकते हैं. Okay, the determination of degree of crystallinity in polymers like low density polyethylene and high density polyethylene. उसकी crystallinity कितनी है पॉलीमर की, दो पॉलीमर की हम बता सकते हैं, like low density है या high density polyethylene, वो बता सकते हैं. Then comparative chain lengthening in organics. Organic chemistry में chain length, number of carbon, hydrogen is added. For example, then any functional group is added, proceeds on that will have to determine this IR. The UV other degradation, depolymerization and polymers and paint coating industry में इसको use किया जाता है IR. In gaseous sample using gas cell or head space analyze environmental for environmental monitoring. Okay. Then the FTIR analysis for known solvent, cleaning agents and detergent combined with GC that we had already.
The temperature dependent study material using heated stage accessory and small microscopic particles chemical analysis by FTIR microscopy. Generally, in pharmaceutical industry, APIs means active pharma ingredients for structural elucidation or reaction confirmation from while transforming the one functional group to another functional group that we have to identify with this FTIR and what WFI for water injection blood products are the identifying specific fibers and particles inhaled thus by FTIR microscopy. FTIR microscopy, microplastics, fresh water, sea water, oil water, and wastewater with pyrolysis of GCMS. GCMS means gas chromatography with mass spectroscopy is attached like that. The medical, it also used rubber, plastics, and medical devices industry. And another uses of SEM and EDX of filler materials that SEM is scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray analysis that is used in a primer top coated, clear coated paint industry is generally used to analyze the quality of a color. Okay, coating, single coating, double coating like that, they have analyzed with this. The FTR analyzed the reverse engineering of no unknown compound and formulation, particularly combined with the GCMS. When आप GCMS उसे connect करते हैं, that time we analyze evaluation of a chemical reaction pathways, rates of reaction, assessment of reaction completion. जैसे chemical transformation होता है, एक functional group से दूसरा functional group बनता है, so that is evaluated by this FTIR process because they obtain a different absorption in different bands in different regions. Okay, the pyrolysis characterization of antimicrobial coating in polymers by FTIR. जो अभी पेंट आ रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल पेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, so that for that industry is also used to analyzing this coating or polymer industry at the basis of. Then SEM scanning electron microscopy. Scanning electron microscopy provides an image and magnification up to 15,000x, allowing submicron scale feature has it is used beyond the range optical microscope. The rapid high resolution imaging with identification of elements present, especially quantitative EDX and ED analysis, electron diffraction analysis for use defined areas of sample surface, characterization of particular defects, examination of grain structure of segregation effects, coating thickness, measurement using cross-sectional imagery and polish section areas of particular paint. For this SEM can be used. Then the typical applications for the characterization of materials known as the reaction interface service environmental degradation mechanism, the surface defects, stain, residue material, glasses, ceramics and polymers are used for surface defect क्या है stain पढ़ सकते हैं. The thickness of layer structure, metabolized layers, oxidized film, composite materials using cross-sectional imaging, particulate in contaminants analysis on within material. In industry, by using SEM and EDX, they use aerospace industry, automotive industry, material industry, minerals, glass, ceramics and refractory, healthcare, medical devices, semiconductors and electronic devices. This by using this IR technology used. Then mass spectroscopy. This is the mass instruments thermofisher made by thermofisher is used. Okay, the mass spectroscopy is a basically type of spectroscopic technique that helps to identify the amount of a chemical present in a sample by analyzing the mass, the charge ratio of the ion, m by z. For example, E value or m by z value आपने स्टडी किया होगा. With this mass spectros got a fragmentation that again there are two techniques, LCMS and GCMS. Liquid chromatography
with the mass chromatography and gas chromatography. The sample gets converts into liquid. The solution form is used, that is called as a liquid chromatography, and sample is converted into gaseous or vapor phase is called as a gas chromatography. Okay, generally the technique widely used in industry to analyze that, but right now LCMS and GCMS is commonly used in a research industry, research, particularly in chemistry researchers are used. Then the applications of mass spectroscopy, the mass spectroscopy के जो applications है is valuable tool to quantify a known material. जो आपको मालूम है वो आप बता सकते हैं उसमें, वो particularly उसका after fragmentation we know the to analyze this. It also the identification of unknown compounds and determination of structure and chemical composition in various substances. The simplest and most common application of mass spectrometry is to determine determine the accurate molecular weight of a substance that we got by using M plus ion or M plus 2 ion. Verify the presence of oligonucleotide with the sequentially we have to after fragmentation one by one. For example, in amino acid, number of amino acids are coupled with जो एक साथ जुड़े हैं उनको डिग्रेडेट कर by after degradation we got a number of जो भी molecular weight है वो molecular weight हमको peak is obtained in a spectra by the number of compounds coupled with each other, so that wanted to predict and which particularly applies for synthetic oligonucleotides produced by techniques of molecular biology such as polymerase chain and reaction PCR reaction biology, और polymer में भी इसको हम यूज करते हैं for the determination of a molecular weight. This type of spectra we got in a mass spectrometry. MS in mass spectrometry fragments of the molecule and measures their masses. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है इथिल अल्कोहल का, जो दिखा है M प्लस दिखा है उनको, the total molecular weight is 46. So M plus 1 got a 40 at a peak at 47, 46 and 47 got two peaks. That is called as a molecular ion peak. Base ion peaks is abundantly obtained in the spectrograph. This is called as a base ion peak after fragmentation by removal of a CS315 CH plus and CS2OH is a base ion peak is obtained. They're having a charge plus one charge, and it can also with the molecular weight and compound and functional group is also determined with this. Okay, this is the best application of a mass spectrum. Then the next spectroscopy is the atomic absorption spectroscopy. This atomic absorption spectroscopy is quantitatively measure the concentration of an element present in a liquid sample. Liquid sample हम solid sample भी use कर सकते हैं, but solid sample is dissolved in a liquid generally, so that is converted into liquid form and then ignite into this flame. It utilizes the principle that elements in a gas phase absorb light at very specific wavelength, okay, which gives us technique excellent specificity and detection limits. The general diagram, block diagram of atomic absorption spectroscopy, shortly called as AAS. Hollow cathode, lens is used, flame, monochromator, and then detector, then amplified, and then record the spectra. Okay, so in light of a specific wavelength appropriate to element being analyzed is gone through the flame की बीच में pass होता है. The absorption of proportional and concentration of element होता है उसमें. Then quantification is achieved by preparing the standards of element. जो with the help of a previous known concentration and calculate the unknown concentration. How much concentration is present by this technique?
and calculate this is the atomic absorption AAS instrument. The sample may be aqueous or organic solution. Indeed, it may be a solid, provided it can be dissolved successfully. The liquid is drawn into a flame where is ionized in the gaseous phase. This यहाँ ये spectra हमें मिलता है इस तरीका with respect to absorbance and wavelength. Okay, the Fe with the spectra we got a Fe is a green line spectra. SN is a red line spectra, and CD is obtained at the 228 nanometer wavelength level. Is like that. So applications of AAS, it can quantitatively measure the concentration of a metal. The paint industry is used to analysis of lead and paints, and also monitoring the trace metals in industry effluent treatment, water for example, effluent treatment is a ये कंपनी की बहुत बड़ी समस्या है कि इफ्लुएंट जो वेस्ट वाटर रहता है वो इंडस्ट्री थ्रू आउट द जो वैसे ही छोड़ देते विदाउट ट्रीटमेंट, तो ट्रेसेस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट इफ्लुएंट. दैट ट्रेसेस एलिमेंट मस्ट is to be removed from this water, and then the water is get dist or छोड़ सकते हो नाली में ऐसा. The traces element in products, raw materials, along with the ICP and EMS were to analyze. Analysis with additives and purity in steel industry and other metal alloys with this AAS can analyze. The following elements are analyzed through this AS spectroscopy: aluminium, antimony, arsenic, barium, beryllium, bismuth, boron. The extra number of elements: palladium, nickel, rhodium, silicon, silver, sodium. These elements analyzed with this AAS. Their most widely used applications is to analyze the soil. जब सॉइल का आप परीक्षण करते हैं, माटी परीक्षण बोलते हैं, वो इस एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. जो मोस्ट ऑफ द तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द AAS इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल in agriculture department to analyze the soil. Okay, so the most important application of this atomic absorption spectroscopy. Then the NMR, nuclear magnetic resonance spectroscopy, ये आपने BSc में पढ़ रहे होंगे, और PG में भी आप ज़्यादातर स्टूडेंट NMR पढ़ते हैं और सिलेबस में है. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टू, सो ज़्यादा तो उसकी आपको यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट दिस NMR briefly. So nuclear magnetic resonance spectroscopy is a technique that utilizes a magnetic resonance of the nucleus to determine the structure of various compounds. Generally, for NMR, we need 5 to 25 mg of material, and up to 100 mg material gets to analyze this compound. With this technique, it's used to measure a magnetic field that exists around atomic nuclei. जो एटॉमिक न्यूक्लिया के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके बाद में we got some type of spectrum. NMR spectroscopy uses radio waves to excite atomic nuclei in a sample. When nuclei start to resonate, this is detected by sensitive radio receivers. But number of nuclei to analyze by this NMR spectra includes 1H NMR, C13, N15, F19, and P31. There required an odd number of electrons to analyze this spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy. This is a diagrammatically representation of a frequency of NMR spectrophotometer. Generally, radio frequency is used near about 16 megahertz to 1000 megahertz. The sample tube is placed in between the two magnets, and then
the detects the radiation, the absorbance and get rays transmitted to detector that amplified and in a जो computer पे दिख रहा है in the form of spectra, singlet, doublet, triplet, quartet, multiplet like that, octet. Generally 16 मेगा जो पहला इंस्ट्रूमेंट बना था वो 16 मेगाहर्ट्ज का था, नियर अबाउट 1950, 1951, 50 to 1951 or so. And then still now we are using then progressed and we got right now 100 megahertz NMR spectrometer is a spectroscopy is available, okay, in different countries. So these are the two instruments with ultra shield is a 400 megahertz left hand side, right hand side is a 900 megahertz NMR spectrometer center in bionuclear NMR Heinrich Hein University Düsseldorf is there. But 400 megahertz Bruker DRX is used right now in different industrial and research CSIR labs, and some of the universities are also affordable like that. This use करते हैं ये 400 660 to 400 megahertz use करते हैं. एक सैंपल ट्यूब होती है, सैंपल उसमें प्लेस करते हैं, सैंपल ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, द सैंपल इज प्रिपरेशन इन by using CdCl3 or deuterated water is used for preparation of the sample. Then TMS trimethylsilane is used, okay, so as a reference use करते हैं. कोई बता सकता है? Am I audible? Yes sir. TMS कोई स्टूडेंट बता सकता है कि TMS हम क्यों यूज करते हैं फॉर NMR फॉर मेकिंग द सैंपल? ट्राइमेथिलसिलेन. ओके, टेट्रामेथिलसिलेन सर. हाँ, टेट्रामेथिलसिलेन, क्यों यूज करते हैं TMS? ठीक है. You got a single peak of that methyl groups surrounded by the silane molecule. Okay. Then this type of spectra is obtained in the form of measured in Dell form. NMR spectroscopy analyze the environment of hydrogen, particularly 1H NMR is a hydrogen of compound. This gives a useful clues to the alkyl and other functional groups. Then they are again classified into two different types of NMR, 2D NMR, two-dimensional NMR methods, COSY, TOXY, like that, noisy. There is a obtained by detect the coupling between nuclei that are close to each other, the space to identify like that the spectra different molecules if there is a complicated structure. So with the help of this, you can analyze the structure in two-dimensional NMR spectroscopy. The applications in pharmaceutical industry and biotech industry generally used to using to analyze the new drug discovery, structural confirmation, and identification of various pharmaceutical effects within natural products. In biodiesel industry, generally the biodiesel is prepared by the transesterification process, so it can easily characterize analytical or the monitor and analyze analytical research purpose. With this very easy technique and non-destructive validation of kind of components that regulated by biodiesel standardization, water, alcohol, glycerol content, and phosphorus. The NMR can also be incorporated quite seamlessly to improve the workflow and quantify the percentage of biodiesel in composite fuel mixture. In polymer research industry can use to identify the characterization of polymer, then in presence of stereoisomer, determine the polymeric
tactility, determine the modular number mn, molecular weight, and polydispersive index PDR. For that purpose, NMR is used. Process analytical technology industry is used uh, for the magnet. Researchers incorporate few systems on a bench, few mode manufacturing process to convert into digital detector in lab. Then for typical research applications in NMR, it is a powerful tool to rely and mature technique of structural identification of both natural and synthetic origin molecules, including polymer and biomolecules. Uh, the intermolecular interaction determined with the help, for example, hydrogen bonding is determined with this NMR spectroscopy. Then molecular dynamics and protein folding, for dynamic large biomolecules and protein folding unfold mechanics is determined this NMR technique. Then membrane studies in protein ligand interaction and provide information. This information provides by this membrane, this NMR instrument. It's called as membrane study. Enzymatic interaction. It is useful for confirmation studies and is feasible on compounds found to enzyme with the help of understanding biochemical process and their mechanics. So the industrial applications, NMR that you have to study, pharmaceutical industry, food industry is also used to determine the qualitative analysis of both target compound as well as a suspected prohibited constituents. Uh, in this, then the spectroscopy and chromatography, these two techniques are used in a food industry to analyze the suspected and prohibited constituents of a target. Then pharmaceutical industry, always know for the drug identification, confirmation and identification of drugs bonding with receptor and proteins after intaking. So in polymer industry, the TGNMR is used, polyolefins, all these things. The studies and to estimate the impurity to identify the impurity profile, contaminants and degradation products that contribute by aging effects of the such material. Okay, these are the and most right now they're using the MRI. All of you aware of आप सब जानते हैं MRI क्या चीज है. So that MRI is none other than magnetic resonance spectroscopy. MRI is a magnetic resonance imaging. The radio frequency is applied on a human body patient, and we got some, and we know the हम सब शरीर के अंदर क्या हो रहा है, फ्रैक्चर कहाँ पे है, क्या स्कल में आपके क्या कहाँ रप्चर्स है, क्या क्या मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो हमें मैग्नेटिक एमआरआई से हमें पता चलता है. फॉर छोटी छोटी चीज़ों का बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो दैट वी गॉट थ्रू दिस एमआरआई. Then, with this nuclear magnetic spectroscopy, they got the 3 Nobel Prizes, okay, on this spectroscopy to invention for this invention. First Nobel Prize got in chemistry in 1991 for the contribution of development of methodology of high resolution nuclear magnetic resonance NMR spectroscopy. In Richards R. Ernst got this prize. In next 2002 for development Woodridge got a Nobel Prize in chemistry in 2002 for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the 3-dimensional structure of biological macromolecules in a solution. And third, in 2003, in the medicine for discovering the concerning magnetic MRI, magnetic resonance imaging, that as scientist Paul Lautenberg and Sir Peter Mansfield. We got this Nobel Prize for discovering the concerning magnetic resonance imaging in 2003. So other applications of this NMR, lots of applications, API, pharma industry, pharmaceuticals basically, and researchers also use. There are C13, and thank you very much, sir, for giving me the opportunity to share my views
with the students and you. Now the topic is open for discussion. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने हमें धन्यवाद। बताया। हेलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, आपने आपने हमें इंट्रोडक्शन में यह बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब किसी सब्सटेंस के ऊपर डाली जाती हैं तो वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस, कैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रा। इसी प्रकार से आपने सहज शब्दों में हमें बताया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर सिंपल प्रकार सभी पढ़ते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और भारत में खोजे जाने वाली रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हम सबको आपने अवगत कराया। साथ ही साथ थर्ड पार्ट में आपने एप्लीकेशंस पर जोर दिया। अभी तक जितनी हम लोगों के द्वारा एप्लीकेशंस के बारे में सोचा गया था, आपने उससे बहुत ही ज़्यादा और विस्तृत रूप से एप्लीकेशन के बारे में हमें बताया। सबसे पहले यह बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉन्ड और कई एप्लीकेशंस के बारे में हम सबको आपने अवगत कराया। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन में आपने हमें बताया कि ये बायोडीजल इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशंस हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री और रिसर्च में इसके एप्लीकेशन को विस्तार से समझाया। साथ ही साथ स्ट्रक्चर डिटेक्शन के बारे में भी हम सबको आपने बताया। आपने जो नॉलेज दिया उससे हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है सारे पार्टिसिपेंट्स और खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि समय समय पर जब भी हमें या हमारे कॉलेज को ज़रूरत होगी आप सहज ही उपलब्ध। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे की कार्यवाही के लिए माइक देना चाहूँगा अपने ही विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप मालिक जी को। वो आए और सभी का धन्यवाद प्रेषित करें। डॉक्टर प्रदीप। थैंक यू वेरी मच सर फॉर आप 2 मिनट 2 शब्द बोल सकता हूँ? सॉरी फॉर इंटरप्शन। प्रदीप मालविया जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए सर। ओके बोलिए सर। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने मुझे अपना ज्ञान बांटने के लिए यहाँ सुविधा उपलब्ध करा दी है। ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर यादव सर एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बिछुआ, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ उनका। एंड IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पूजा तिवारी मैडम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट एंड कन्वेनर डॉक्टर गौतम पाटिल सर, जिन्होंने मुझे यहाँ आपसे अपना केमिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक पे बोलने के लिए मुझे अनुरोध किया और उन्हें सक्सेसफुली कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो थैंकफुल प्रिंसिपल डॉक्टर मृणाल काड़े मैडम, आनंद निकेतन कॉलेज वरोरा, and once again thank you very much for all coordinators and organizing team। और अहिरवार सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ and also thankful to all students। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप मालविया जी। अहिरवार सर, मैं प्रदीप मालविया में आप सभी के समक्ष आभार व्यक्त करने हेतु सादर उपस्थित। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे आज के इमिनेंट स्पीकर डॉक्टर संजय पी मोटे सर का, जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय पर
अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे छात्र छात्राओं को बड़े ही ध्यान से छात्र छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया। आशा करता हूँ कि आपके महत्वपूर्ण विषयों पर रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। अब मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे कार्यक्रम के संरक्षक और संस्था के प्राचार्य डॉक्टर आर.पी. यादव सर का, जिनके कुशल नेतृत्व और सहयोग से हमारा आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आनंद निकेतन महाविद्यालय वरोरा महाराष्ट्र के प्राचार्य डॉक्टर एम काले सर एवं रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.A. शाह, IQAC कोऑर्डिनेटर मिस सरोज सहारे मैम का, जिन्होंने हमारे महाविद्यालय के साथ MOU करके ज्ञान और तकनीक का हमारे महाविद्यालय के साथ साझा किया। आभार की इसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी IQAC कोऑर्डिनेटर और समाजशास्त्र के विभाग की HOD डॉक्टर पूजा तिवारी मैम, जो कि मतलब आज हमारे साथ में उपस्थित नहीं हो पाई, इस कार्यक्रम को ज्वाइन नहीं कर पाई, जिनका मोटिवेशन और मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के कन्वेनर और HOD डॉक्टर गौतम पाटिल सर का, जिनके अथक प्रयास से और सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सहयोगी डॉक्टर अनिल कुमार अहिरवार सर का, जिन्होंने सफलतापूर्वक मंच का संचालन किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डॉक्टर नसरीन अंजुम खान मैम, मिस्टर भोजराज झरबड़े सर का, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं साथ ही साथ आभारी हूँ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर कविता चहल मैम एवं डॉक्टर इस्मिल बेलिया मैम का भी, जिन्होंने बिना किसी अवरोध के कार्यक्रम को संपन्न करवाने में हमारी मदद की। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी संस्था के और अन्य संस्था के जुड़े हुए सभी प्राध्यापकगण का, साथ ही छात्र छात्राओं का, जिन्होंने बड़ी ही शांति और तन्मयता से आज के व्याख्यान को सुना और कार्यक्रम को सफल बनाया। और अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कार्यवाही के डॉक्टर करना चाहता हूँ। पर पुनः डॉक्टर मोटे धन्यवाद। लेक्चर समाप्ति से कहता हूँ वो हमें दान कर। डॉक्टर आदा जी में सुन पा रहे हैं क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज हाँ, क्लियर आवाज नहीं आ रही थी सर। सर लेक्चर में होंगे सर। सर वहां से अब आपकी आवाज मुझे प्रॉपर आ रही है? आइए सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, क्या महोदय? हेलो सर, हेलो।